वो भी अभी यूट्यूब के ऊपर आ रहा है। अब सब लोग को ऐसा लग रहा है कि जैसा अंग्रेजों ने मेडिसिन बनाया था वही बना सकते, लेकिन हमारे यहाँ तो पत्ते से लेके बूटी तक सब दवाई है। लेकिन हमको वो अच्छा नहीं लगता, हमको ज़रा ब्रांडेड अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी आदिवासियों ने मेडिसिन बनाई है कि जो साइंटिस्ट ने नहीं बनाई। साइंटिस्ट भी उनके पास जा रहे हैं, आपने कैसी दवाई बनाई। तो मुझे लगता है कि हमारे जनजाति के पास जो भी संभावना है उनके ऊपर खोज करना चाहिए। हमारा दायित्व है, हमारे सभी समाज का दायित्व है, हमारे साइंटिस्ट का दायित्व है। जनजाति के पास जो जो भी है, जंगल में वनस्पति है, उनकी अनेक कलाएं हैं, उसका हमने जतन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जनजाति का जो कल्चर है हमने उसको जिंदा रखना चाहिए। अगर हम उनका डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट तो करो लेकिन साथ साथ उनका कल्चर भी जिंदा रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में आपको ये ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंस लोग हैं, डिफरेंस कास्ट है, डिफरेंस रिलीजन है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है या सब कुछ मिलेगा। हमारा देश मुझे लगता है कि एक प्रकार का कल्चर का मॉल है, कल्चर का हब है, जहाँ हमारे यहाँ नैतिकता है, हमारे यहाँ पाप पुण्य की कल्पना है, हमारे यहाँ एक प्रकार का धार्मिक महत्व है। हमारे यहाँ एक मैरिज में देखा जाए, मैरिज को भी धर्म का महत्व है। इसलिए हम बोलते हैं जिएंगे साथ में मरेंगे साथ में। पारे में नहीं दिखता आपको, वो तो एक साल में चले जाते हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो हमारे यहाँ जो भी कंट्रोल है सोसाइटी के ऊपर वो रिलीजन के कारण है। अगर रिलीजन नहीं होता तो इतने 140 करोड़ पॉपुलेशन के देश में पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती, रूल कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारा एक ऐसा रिलीजन है कि हमको एक इसमें बांध के रखा है करके, तो हम हमारे देश में सभ्यता से रहते हैं। इसलिए आज का जो मीट रखा गया है वो मीट एक ऐसा मीट है कि हमारे जनजाति में जाके हम लोग सभी पढ़ने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं। हम तो सोचते हैं कि हमारे कॉलेज में रह के ही जनजाति का कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हमारे बराबर के लोगों से बात करने ही जनजाति का कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बात यहाँ तक आती है जब तक आप टॉक करते रहोगे, प्लानरी सेशन लेते रहोगे, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन हम जैसे लोगों को ऐसी आवश्यकता है कि जनजाति के क्षेत्र में जाके वहाँ क्या प्रॉब्लम है, वहाँ कौन सी संभावना है, ये हमने ढूंढना है। अगर अब पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा साथ और जनजाति का विकास हो सकता है। इसलिए मैं इस बड़े मंच के माध्यम से यही कहूँगा कि हम लोग जनजाति के साथ में, जनजाति के विकास में जुट जाए। अगर हम उनके साथ में जुट जाते हैं तो उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव है, ऐसा मुझे लगता है। आज वीसी सर के जगह मुझे आज यहाँ बुलाया है तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। आप हमारे विश्वविद्यालय में आए, इसलिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका धन्यवाद लेते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की जनरल प्रेसिडेंट डॉक्टर विजया लक्ष्मी सक्सेना जी से विनम्र निवेदन है कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत कर हमारा मार्गदर्शन करें।
A very good afternoon to you all present here in this hall. Dr. Sanjay Dhude, Pro Vice Chancellor, RTM Nagpur University, Registrar Dr. Raju Vyase, Dr. Ramakrishna, General Secretary, Indian Science Congress, Local Secretary, Dr. Govardhan Khadekar, Dr. Shyam Rao Koreti, Convener Tribal Meet, and I am seeing in the first row they are sitting so many General President and President-elect, Arvind Saxena ji, Dr. Saxena, former General President, and GP-elect, and Dr. B.K. Das, Director, Central Indian Fisheries Research Institute, EC members. There are so many inspiring personalities. They have become the role model change, moral leadership, and entrepreneurship. Council members and members of the faculty, travelers coming from the different corners of the country, my dear students, ladies and gentlemen, and media personnel. I am very happy to organize Tribal Meet at the 108th session of Indian Science Congress Association. And this is the first time in the history of the Science Congress that a tribal meet has been organized in this large, befitting manner. And for this, I'm really thankful to the convener. All seem I may mention here that as a General Secretary of Indian Science Congress, I was involved at the organization of first Women's Science Congress at the 99th Annual Conference of ISCA at Bhubaneswar. And this time, first time in the history of the Science Congress, this first tribal meet at the RTM Nagpur University, Nagpur. The term tribe is derived from the Latin word tribus. In India, tribal people are known in various names such as Adivasi, Vanyajati, Adim Jati, Girijan, Pahadi, etc. According to 2011 census, 10.43 crores Indians are notified as scheduled tribe, of which 1.04 crores live in the urban areas. ST contributes 8.6% of country's total population and 89.97% in rural areas, and 10.03% lives in the urban areas. Madhya Pradesh has the highest tribal population in India as per 2011 census. The Santals are the largest and one of the oldest tribes in India. They live in Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, and West Bengal. The Bhils are the second largest tribal community living in Rajasthan, Gujarat. Most commonly known tribes of India are Gonds, Bhils, Santhalis, Munda, Garo, Khasi, Angami, Bhutu, Kodaba, and Great Enemies tribe.
During independence, most of these tribal people had no agricultural lands and used to live in a state of. The tribal were also victim of a host of the middlemen. Since independence, Government of India and state government have taken several steps to uplift the life of tribals. It is known that tribal development is a must for the economic growth of India. Government of India has taken initiatives for the socio-economic welfare and empowerment of tribal communities through capacity building, marketing, distribution, packaging, and supportive activities. Most of the tribal population live in the remotest part of the country, which poses several problems for the community as well as the government in assisting their growth. In spite of hearted support by the government, tribal population in India lags behind the social groups in various social parameters, such as child mortality, infant mortality, number of anemic women, poverty, indebtedness, illness, bondages, exploitation, disease, and lastly, unemployment, etc. The major problems is their poor economic conditions. As soon as they live a modest life, their children do not get formal education. The second major problem faced by our tribals that they have not been rehabilitated at the proper places where they have access to water, sanitation, transport, and other facilities required for their development. Prime Minister Narendra Modi ji once said, Chief Minister, tribal area did not have science classes. How would my tribal girls and boys become engineers and doctors? So I created science classes. Now there are medical colleges in tribal areas, and children from tribal areas are going abroad. This is the path to development that we have created. India has progressed very well in the field of agriculture. Modern farming has been initiated in different tribal areas. We know that tribal agriculture is a risk-minimizing system which can provide at least some food even in adverse weather conditions. The relevance of this eco-friendly, zero fossil fuel farming system has increased 4 times in times of climate change and erratic weather. In Dharwad village in Hoshangabad district of Madhya Pradesh, tribal farmers practice a system of mixed cultivation which is called Utira. Several cereals, millets, and legumes are grown together in June. They do not need to spend any money at all to practice Utira farming. These farmers save seeds from the previous year's crop. These types of typical knowledge of farming are tribals. A blend of this knowledge with the modern farming method may be required for the upgradation of quality and quantity of the yielded crops. Biodiversity supports human and societal needs, including food and nutrition security, energy, development of medicine, pharmaceutical, and fresh water. The tribal population live in close vicinity of forest and have managed and conserved the biodiversity of the locality for a long time. These tribal takes shelter from forest and utilize wild edible plants, both raw and cooked. No one can look after their forest and environment better than the tribal people, because their survival and identity depend on it. Tribals
conservationists, and they have managed their cultivable lands for many generations. Another important area is to develop drugs and diseases from plants which are being used by tribal population for the last several centuries. Ethnic knowledge and wisdom may contribute greatly in modern medicine. Several examples may be given in this respect. Campo formulation, a plant-based product, is being used by the Japanese agent from plant Taxol. A large number of plants used by tribes identified by Indian scientists who play a role in the treatment of different diseases in tribal population. The development of modern technologies help in identification of specific plant product. The research in this field has been facilitated by new rapid bioassays in which robotic arms and computer-controlled cameras test a small amount of plant samples for the presence of compound active against different diseases within few minutes. However, one of the best sources for finding plant species is to test is still the healer's pouch, because such plants have been tested by generations of tribal people. It is understood that in spite of several government initiatives, there are large lacunae in the growth and welfare of the tribal population in India. An innovative scientific and technological approach is required to improve the quality of life of most of the tribal populations. I thank Dr. Shamrao Koreti, convener of the and his team for the successful organization of tribal meet for the first time in India in RTM University, Nagpur. I thank DST for providing scientific and financial support. I am sure DST will continue to provide support and encouragement for the tribal meet in future endeavor like this year also. Let me also take opportunity to wish you all a very happy and prosperous New Year 2023. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vigyan, Jai Tribals. थैंक यू मैम। मंच पर विराजमान मान्यवरों से निवेदन है कि ट्राइबल साइंस कांग्रेस की स्मरणिका का विमोचन करें। मान्यवरों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर जा रहे हैं। ट्राइबल साइंस कांग्रेस के संयोजक डॉक्टर श्याम कोरेटी जी से निवेदन है कि वे इस कार्यक्रम का आभार ज्ञापन करें। आदरणीय कोरेटी सर। धन्यवाद सर। अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं यहाँ पर फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज इस कार्यक्रम में आए हुए भारी संख्या में जो विद्यार्थीगण हैं, सबसे पहले आप सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना मैडम, जनरल प्रेसिडेंट इंडियन साइंस कांग्रेस, जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन करने के लिए हमें अनुमति दी, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। इस मंच पर उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर एस रामकृष्ण सर, जनरल सेक्रेटरी इंडियन साइंस कांग्रेस, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दी। इस कार्यक्रम में
इंट्रोडक्टरी रिमार्क देने वाले डॉक्टर संजय दुधे जी, माननीय उपकुलपति महोदय, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, उनका भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हमको मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर राजू हिवसे सर, रजिस्ट्रार, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा इस सभागृह में, बिरसा मुंडा सभागृह में उपस्थित इनवाइटेड गेस्ट हैं, सारे काउंसिल मेंबर्स इसका के, डेलीगेट्स बहुत भारी मात्रा में उपस्थित हैं, मीडिया पर्सन्स, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पर जो है आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर खड़ेकर सर जो लोकल सेक्रेटरी है, डॉक्टर राजेश सिंह सर लोकल सेक्रेटरी इंडियन साइंस कांग्रेस, इन दोनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम केवल इन्हीं लोगों के मदद के कारण नहीं हुआ है, इसके पीछे में भी बहुत बड़ी और संख्या है, जिनमें मैं बड़े आदर के साथ श्री रविंद्र ठाकरे सर जो IAS है, अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपुर, जो इस वक्त हमारे मंच पर सामने वाले सीट पर बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने भारी मात्रा में विद्यार्थियों को यहाँ उपस्थित रहने के लिए अनुमति दी और ट्राइबल मीट की हम शोभा उन्होंने बढ़ाने में मदद की। इस कार्यक्रम में मुझे बड़े आनंद के साथ में यहाँ बताने में हर्ष हो रहा है कि श्री आदित्य शाह जी जो नागपुर के जो फाउंडर रह चुके हैं, जिनकी प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर, राजा बख्त बुलंद शाह, उनके 14वें वंशज आदित्य शाह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर आपका भी इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा सक्सेना साहब जो सामने बैठे हुए हैं, उनकी टीम है, इनवाइटेड स्पीकर जो इसके बाद में इमीडिएटली हम लोगों को मार्गदर्शन करने वाले हैं, मैं आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ और उद्घाटन का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर मैडम एक मिनट, माननीय श्री आदित्य शाह जी को मैं यहाँ पर निमंत्रित करना चाहता हूँ, जिनके पूर्वजों ने नागपुर शहर का निर्माण किया, उनका एक पुष्पगुच्छ देकर हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। आणि संतोष अच्छा हे असं आहे का? ठीक आहे, आणि कोरेटे सरांचा नंबर आहे तुमच्याकडे? मान्यवरों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तुरंत अगला सेशन शुरू होने वाला है, तो अगले सेशन की जिम्मेदारी मैं इतिहास विभाग के डॉक्टर रवि खंगई सर को देता हूँ। Good afternoon, friends. We are starting with the first technical session immediately, and I request the speakers to kindly come on the dais. Professor Pradeshi Lal, Vice Chancellor of Nagaland University, sir will be chairing this session. Professor Vinod Bala, Dr. Hemlata Wankhede ji, Professor Prakash Halami, and Professor Gitanjali Dash, Vice Chancellor of Behrampur University. All the speakers are requested to please take their seat on the dais. आइए मैम, आइए। हाँ सर, प्लीज टेक सीट इन द सेंटर। कब तक चलेंगे? हाँ सर, 1 hour, वी हैव टू जस्ट गिव 10 minutes, 10 बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। हाँ, तो मैं वो मॉनिटर करूँ, अगर आप परमिट करेंगे तो 10 minutes के लिए, है ना? हाँ, आई विल कॉल वन आफ्टर अनदर स्पीकर। हाँ, प्लीज टेक सीट मैम, टेक अ सीट। बैठिए मैम, इधर भी आ सकते हैं। Professor Halami, I request you to come on the dais. Yeah.
सर उस तरफ से we are already अच्छा हाँ okay we have on the dais Professor Pradeshi Lal, Vice Chancellor of Nagaland University, who will be chairing this session. Professor Vinod Bala, Dr. Hemlata Wankhede ma'am, Professor Prakash Halami, and Professor Gitanjali Das. As we are running short of time, I request the first speaker of today's first technical session, Professor Vinod Bala ma'am, to please start her presentation. Vinod Bala ma'am is Emeritus Scientist, Chemistry Department, Maharaj Dayananda University, Rohtak. As we are running short of time, I request all the speakers to please finish their talk in 10 minutes. I also request my colleague, Dr. Raj Birmod, to please take a seat on the dais. Ma'am, you please proceed. इस सभागार में उपस्थित सभी को हरियाणा की मिट्टी से मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे पहले मंच पे उपस्थित सभी को स्पेशल नमस्कार करती हूँ और मंच के नीचे बैठे सभी को फिर से बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी शुरू करूँगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रियली लाइक टू थैंक जनरल प्रेसिडेंट इसका फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक in this 108 ISKA, and it is a pleasure for me that this is the meet which is being organized for the first time and I have an opportunity to speak. Thank you very much, sir. With the permission of the chair, I start my talk. So, as you all know, I am from Haryana. We have no tribals. But first of all, I will like to salute Bhagwan Birsa Munda. And start my presentation religiously. And as you all know, that the first tribal president of India, Draupadi Murmu, said, "It is a matter of great satisfaction for me that those who have been deprived for centuries and those who have been denied the benefits of development, those poor, downtrodden, backward, and tribals are seeing their reflection in me." The tribes, as you all know, are the native people of the land who are believed to be the earliest settlers in Indian peninsula. They are generally called Adivasis. And this is a picture which I have taken from village Bana, and this next picture is the tribes which are present in this auditorium also. They are from Orissa. The term tribe is derived from the Latin word tribus. Tribe is defined as a social group, usually with a definite area, dialect, cultural homogeneity, and unifying social organization. Tribes live in desert without any communication with various centers of communication. International Day of World Indigenous Peoples is observed on 9th August, and the Janjatiya Gaurav Divas is celebrated
on November 15th. India's tribal population as per 2011 census is 10.43 crores, and it is the second largest in the world after Africa. They constitute an important segment of our country, constituting 8.6% of the total population of India. There are more than 700 tribes. The tribal decadal population growth has been 23.6 against the 17.7% of the entire population, and the sex ratio of ST is 990 females per thousand. The term scheduled tribe first appeared in the Indian Constitution, and the Article 366(25) defines scheduled tribes as such tribes or tribal communities or parts or groups within such tribes or the tribal communities as are deemed under the Article 342 to be scheduled tribes for the purpose of this Constitution. So that is why they are called scheduled tribes, and the Article 342 prescribes the procedure to be followed in the matter of specification of the scheduled tribes. And if we see broadly you have categories. Geographically, they are, distributed in the central India and northeastern part, as the chart has been depicted, giving the percentages. There is no ST population in 3 states, and I belong to a state where there are no tribals, but I really wanted to work on tribals, and I have been reading and studying and working with them since last 1 year. Tribals live in most pristine and picturesque environment of the country. This is the beauty of tribals, and I salute them that they are really the protectors of our nature. We should really salute them for this, that they are preserving so much natural resources for us, protecting us from so many boundary areas too. Ironically, they are considered to be the poorest, but dwell in the areas where richest natural resources are found. सबसे ज़्यादा वन संपदा वहीं है, पर सबसे पुअर भी उन्हीं को माना जाता है. The main source of livelihood is agriculture, rearing animals, hunting. Some are gatherers and herders, and some tribes are nomadic too. The tribals under British rule enjoyed unhindered rights and land ownership and management over natural resources before the British came to India. But under British rule, they lost their authority and administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. They had to pay tribute to British and discipline the tribals on their behalf. They were unable to fulfill their traditional functions too. With the impetus to development process and industrialization after independence, pressure on land and forest increased. Also, with the advent of the discovery of mineral and other discoveries and other resources which were present in the forest areas were now open to outsiders. Eventually, state control replaced the tribal control. They had no control now. All was in hand of state. Thus,
With all these changes began the story of unending miseries for the tribals. Before this, I think they had a very beautiful life with no disturbance, no hindrance of others. And they want the same type of life. But I think so development is very important. Tribals are amongst the most vulnerable community in India, and now their fundamental human rights are violated at every step of life. They are still devoid of common infrastructure facilities like road, communication, health education, safe drinking water, sanitation. All these hinder them to absorb the technological and financial help provided by the government. It is evident from the available data that most of the wealth from the tribal areas is being driven for the development of non-tribal areas only in India. Tribals felt themselves uprooted from their cultural moorings and had no secure means of livelihood. This itself constitutes one of the major challenges of the tribal development of India. In the 5-year plans, the programs for the welfare of the scheduled tribes aim at raising the productivity levels in agriculture, animal husbandry, the forestry, the cottage, the small-scale industries to improve the economic conditions. Rehabilitation of bonded labor, it's very important, education and training programs, special development programs for women and children. So all these works are being carried out, but still I will say the isolation, the geographical isolation, if I stress upon remoteness, is the biggest challenge, because the tribal hamlets and habitations are located either in valley or in the hilltops and many unapproachable areas. So it is very difficult to work for them. Mining is a big challenge. Mining, whether coal or any other mineral which is usually carried out in tribal areas of the country, the government of India had stepped up the funds in order to support tribals who face problems or are displaced as a result of mining. The funds to the benefit of tribal communities is being siphoned off for activities that are likely to bring more harm to them. So this is the problem. The more we work for them, so they are saying they are having many uprisings, revolts, agitations, and now they are saying we want our hill back. There are so many like Araku hills and the different hills in Orissa, they want them back. Then the biggest challenge is superstition. It is very difficult to take them out of it because tribals tenaciously cling to the customs and traditions. And that is the biggest problem, that they have superstitions. They are exploited of the tribals. उनसे bonded labor की तरह काम किया जाता है, पैसे कम देते हैं. Roads and telecom connectivity, I am being told to conclude, so I'll just conclude it fast. So there are so many programs run by the Prime Minister recently. 7,000 villages, they are provided with connectivity. Illiteracy is a big problem. It is seen that there are less number of schools, insufficient teaching staff, punitive practices are there, expensive schooling, no transport facilities, and these are the big problems on which government should work. Then they have the primitive agriculture, small holdings they are having, which should be given enough. Then the next challenge is unemployment. They don't have skilled youths. There is lack of awareness, health awareness, because they have their own practices, local beliefs, and self-medicine. Then nutrition is also a big problem.
And on this platform of 108th Indian Science Congress, may I take the opportunity with the permission of the chair to request and appeal to all of you and to the society through media persons, please respect the tribal communities. Also work for the all-round development of the tribals. So if we go for a short route in just 2 minutes, I went to Mana village to show you the tribal life. It is just near Badrinath, 3 kilometers from Badrinath. There are 2 roads and in which they are striving. 6 महीने वो माना में रहते हैं और 6 महीने उनको फोर्सेबली जोशीमठ या गोपेश्वर जाना पड़ता है क्योंकि वो इलाके बर्फ से भर जाते हैं। ये प्रॉब्लम आदिवासी की है जैसे पिक्चर में दिख रहा है। और फिर वहाँ पे मैंने देखा सिर्फ 2 रोड थी जिसपे कि पूरा गांव बसा हुआ था, जहाँ पे कि वुलन्स का काम ज़्यादा था। पोस्ट ऑफिस वहाँ था, एक स्कूल था जिसका पिक्चर आप देख रहे हैं। बट एज द थीम ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी थिंक दैट दे आर आवर प्रीचर्स बिकॉज वो खुद ही सस्टेनेबल थे, अपनी उपज, अपना दूध सब वो अपने आप। अब होम स्टेज भी प्रोवाइड करते हैं और ये अंतिम चाय की दुकान है जिससे मोदी जी ने भी चाय पी थी। और यहाँ पे महाभारत की रचना हुई थी। ये द्वार है जहाँ से कि स्वर्ग में पांडव गए थे। ये घी चाय मैंने पी उनके साथ। ये उनका स्पेशल खाना है, इंदिरा राइस, मिंट चटनी एंड फाटवनी। एंड ये उनके घर हैं बहुत सजे हुए। ये अंदर से मैंने देखा, गैस तो वहाँ पहुँची हुई है। और ये सब पिक्चर्स हैं। थैंक्स फॉर दिस विजिट। अब मैं एक ट्राइबल से मिली यहाँ पे, उन्होंने मुझसे कहा मांगते हैं तो भीख मिलता है और लड़ेंगे तो अधिकार मिलता है। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Sorry that I had to cut you short, but it was very interesting. Now, may I request the next speaker, Dr. Hemlata Wankhede, ma'am. Ma'am is principal of Government Science College at Chamurshi, and ma'am will be speaking on upliftment of tribal population with reference to women at Gadchiroli district. Ma'am, it's over to you. Good afternoon, everybody. All the dignitaries in the dais, dignitaries of the dais. The chairman of this session and all the participants which came here from the various parts of the India and from the foreign, and my dear students. First, बिरसा मुंडा एंड बिरसा मुंडा जी एंड बाबूराव शर्माके जी, इनको विनम्र अभिवादन। और जो लोग यहाँ पे ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़े और अपने को स्वतंत्र मिलाने के लिए जिनका भी योगदान है, उनको मेरा विनम्र अभिवादन। So we gather here for the tribal meet Indian Science Congress. I would like to thank very much to the Honorable Vijayalakshmi Saxena Madam. She is the General President of this conference, and in the India, the first tribal meet has been organized by her vision. So I am very much thankful to the Madam Saxena sir and all the dignitaries of the Indian Science Congress, and mostly the host university, Honorable Vice Chancellor Chaudhary sir and their team Pro Vice Chancellor. So I would like to talk regarding the I am working here in the Government Science College Gadchiroli at the Gadchiroli region. In 2019 I have been transferred there. So I would like to talk about the Gadchiroli. Next. Here, the objective, the history of the Gadchiroli district, I will little bit
make my presentation short so that the time will sufficient. In 1987, it has been established the Gadchiroli district from the Chandrapur district. Before that, it has been in the Chandrapur district, that is the Gadchiroli and the Sironcha. The objective of the work is upliftment of the tribal women, especially the tribal women and girls at Gadchiroli, improvement in the nutrition, basic health, because the health is the most important. Study to build, enhance the skill and create a scope of additional income of the family. Tribal women will be informed for collective business and better bargaining power. The tribal women will be trained thoroughly to make them well equipped with required knowledge technology. Trained project personnel will provide knowledge to the tribal women in the latest trends and to produce market-oriented product for the better possibilities. Next. Now the history of the Gadchiroli. It is known as the tribal and underprivileged area. The population is, you can see in here, the literacy rate is 74 point. The percentage of scheduled caste, scheduled tribe, and the district is the tribal and the underprivileged. Here, the Maharashtra map, India map, and the Gadchiroli map. Here, the languages, there are 7 languages are spoken in the district, that is the Gondi, Madia, Marathi, Hindi, and Telugu, Bengali, and Chhattisgarh, because there are the residents of the Bengali, and it is the border of the Chhattisgarh. Hence, these 2 languages also speak. The major community of tribal, those reside the district are Gond, Madia, Pradhan, Kolam. They have their own language as Gondi and the Madia. Sometimes when the health worker and the health people, they went to the interior area like the Sironcha or Bhamragad, so there is a barrier of the language because they can't know the Marathi, and these people, that is doctoral people, they can't know the Madia. So it is the barrier for giving the health services. The tribals are, the district have their own culture. They are used to perform worship of the god, Parsapen and others. They do the dance Rela, where that is in the festival also, or when the peaks are comes out, that is the harvesting period, the Rela dance in the Holi, in Dashara, and any their cultural festivals. The district and the most of the land covered with the forest, hills, and the most important thing of that Gadchiroli is having a zero pollution because the large forest is there. The main river basin of the district is Godavari, which is border the southern boundary of the district and flows west to east. Now, this is about the Government Science College Gadchiroli. I am very much thankful to the Government of Higher Education as they have given me the opportunity कि I will serve in the Gadchiroli region. Otherwise, Gadchiroli बोले तो सब लोग they are very negative. Gadchiroli गए तो it becomes the punishment. But I am thankful to that our government of Maharashtra because the need of this education is most important into the Gadchiroli, that is the tribal region as compared to the Mumbai, Pune and the large cities, because they need our students जो है ट्राइबल के उन्हें ज़रूरत है एजुकेशन की उन्हें आगे ले जाने की. तो our college is government of Maharashtra. Then वहाँ पे हम BSc, MSc and research, and the female students are more than the male. Near about 80 students are the female. Hence, this is the empowerment to the students of the tribal students by this government, because सभी के सभी student research करने के लिए या PG करने के लिए even though they नागपुर में भी नहीं आ सकते क्योंकि they are from very poor community. I know that since I am working in the Gadchiroli, they don't have money to go anywhere and they are coming from the very remote areas like the Hemalkasa, Bhamragad and Sironcha to take the education, and government gives the education with minimum, very minimum fees. So they providing or empowering to
the tribal peoples and give the opportunity to educate them. So this is our college strength and all that. Now here the women empowerment. The present study has been conducted in Gadchiroli district of Maharashtra, which constitute about 11,299 kilometers of the forest land, making home for a variety of non-timber forest produce, that is the NTEP, including gum plant, oil seeds, medicinal plants, flowers, fooding materials, etc. Mahua is the main product, that is which is called as the Mohua plant is the main product of the Gadchiroli. Jamun, mango, termite and amla. I think Mohua, have you heard regarding the Mohua किंवा मोहा ज्याला म्हणतात त्याला? बऱ्याचशा ट्रेडिशनल लोकांना माहिती असेल. The organizer has requested me to talk in Marathi and Hindi rather. I will try to talk. Okay. Prepared from the forest produce. NTEP has been found to be the highest income contribution to the Adivasi people and the ladies. Many edible products like jam, chutney, squash, sauce, candy, juice, pickles, etc. made by the tribal peoples, prepared from the forest product, and the products prepared from the same are very rich in nutrition. Gadchiroli is known for the forest, mainly the teak wood, and the bamboos are used for the various bamboo craft. The district produced bamboo and tendu leaves. There is a main source of income to pick up the tendu leaves from the forest, and it has been sent to the other cities. Tendu leaves. The district produces bamboo and tendu leaves, and paddy is the main cultural product, that is the rice. Role of the women investment sale in this small scale business like sericulture is also there, apiculture, fishery, dairy, etc. 2 minutes, okay. There is only 2 minutes. I will show you the slides. Now these are the empowerment of the women. Our vision is a society in which women attain their full potential and are able to participate as equal partners in all spheres of life, influences of process and social changes. Mission to create an effective framework to enable the process of developing policies, programs and practices which will ensure equal rights and opportunities for women in the family, community, workplace and governance. Here you can see this one slide. Here, this is the most important potential of the Gadchiroli, that is Shaskiya Hatti camp, means government elephant camp. It has been situated in a very small village, that is Kamlapur. I have visited that village. The elephants come there. The hatti je hai, वो वहाँ पे आते हैं 12:30 बजे, और that is the food. The rice balls are there. The 50 kg rice are prepared there at Kamlapur, and the elephants are fed. So this is a very, I think, neglected place, but it is a very nice place. So up to the 12:30, all elephants came with their young ones also. And these balls, you can see the balls are there, food balls from the rice they make, and they feed. They feed the elephants. So it is the most nice place I like here. There are only 500 houses are there. Very small area, which is called as the Kamlapur in the Bhamragad. Next, now you know that project, Lok Biradari project. आपल्या सगळ्यांना बाबा आमटे माहीतच आहेत. तर 1974 मध्ये त्यांचे चिरंजीव प्रकाश आमटे यांनी हा इथे प्रकल्प सुरू केला. Education के लिए और health के लिए for the Gond and the Madia peoples. At that time there was no electricity, so you can imagine how their doctor family, their Prakash Amte is also doctor, Mandakini Amte is also doctor, MBBS doctor. They live in that area and they work for the tribal peoples. Hemal kasa? 2 minutes? अच्छा.
Next is the Anandvan in Varora, where the rehabilitation of the कुष्ठरोग के लोगों के लिए बाबा आमटे ने ये आश्रम स्टार्ट किया था और यहाँ पे सबका रिहेबिलिटेशन है जो पेशेंट जो अच्छे हो गए हैं तो उनके लिए काम भी यहाँ मिलता है जो नीचे दिया हुआ है और उनके लिए रहने के घर भी वहाँ पे बनाए हैं एजुकेशन में उनका आनंद निकेतन कॉलेज भी है दिस इज द हेमल कसा these are the health facility provide to the tribal and remote peoples. Now these are the NGO works. I will not highlight more. The Search Society run by the renowned person Dr. Abhay Bang and Rani Bang, then Hemal Kasa, and these are Search is there, and all these are the NGOs, non-government organization. They work for the peoples, that is the tribal peoples. Now this is the health. Always there is a challenges of tribal health before the health peoples and before the government. So while there is the elephantiasis, malaria is the main challenges there. तो वहाँ पे हर एक कॉलेज में जाके हमारे कॉलेज में आके भी regarding the elephantiasis, the primary health center, they gives the tablets for the students and for us. I have also taken the tablet because if I didn't take, the student feel that कि हमें दे रहे हैं मैडम नहीं ले रहे इसमें हमने भी लिया हो गया ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है okay. So now this is the regarding the health, this is the parasite which I have collected in the laboratory. This is the common parasite which are 95% of our people is carrying this parasite with us, which is called as the cystoid parasites. Okay. These are parasites in our laboratory. These are the trematodes. This is the life cycle of trematodes, how they get infected to the human beings. These are the rashes by parasite. This is the parasite collected in our laboratory. This is the life cycle. These are the hooks to suck the ready-made food material from the intestine of the human beings. This is again the life cycle. Okay. This is the parasite which is very dangerous. Okay, this is the, 1 minute. This is the elephantiasis which is found in the tribal areas. Okay, thank you very much. One thing I would like to say, we having the opportunity. Opportunity क्या है? Forest है, बहुत potentials है, वैद्य है, दवाइयाँ है. फिर भी फ्लोरा है, medicines है, population is more and the oxygen level is more about the 90 and the zero pollution as compared to the cities. But we having the challenges also. Challenges ये है कि damp vegetation है इसमें forest में, इसीलिए mosquito cannot control. और एक हमारे डॉक्टर गए थे करंडा बोल के गांव है, it is a very in the remote place. He told me that कि nobody was there in the house. Everybody, women along with their children went to the forest for their food and all that. तो इसीलिए वहाँ पे जो मलेरिया का हॉटस्पॉट था करंडे गांव, they can't control. These are the challenges before us. And the elephantiasis is also there, that is the 6.36 Hathi Rog, and the malaria which is the most in the Maharashtra region, in the Gadchiroli, that is 66.64. TB is also challenges for us because there is a spitting habit of the people. और जब तक ये हैबिट नहीं जाएंगी जब तक टीबी कम नहीं होगा. These are the challenges before the governments. Wildlife also, 21 persons from the Gadchiroli district are attacked by the tiger, by the human trafficking. Wildlife also. Now, our mission is very simple. We serve for tribal people in all aspects and would like to bring the tribal student in the education. My tribal student will definitely go to the, or definitely he will be recognized as the world center or in the world, that is the student from the Gadchiroli. Thank you very much for listening me. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. हाँ, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. May I now call next speaker, Professor Prakash Halami. He is Chief Scientist and Professor at CSIR Central Food Technological Research Institute, Mysore. Sir, may I request you to adhere to the time, please? Please go ahead.
Good afternoon, everyone. Most of the audience definitely must be looking what I am going to talk in this Tribal Science Congress. At the outset, I would like to thank the organizers for inviting me. ऑर्गनायझर्सना म्हटलं आहे की मी मराठीत बोलावं. 2 दिवसापूर्वी गडचिरोलीमध्ये होतो. गडचिरोली जिल्ह्यात मराठी इम्प्रूव्हमेंट करण्याचा प्रयत्न केला, पण तेवढा सक्सेस रेट कमी आहे. हेल्दी लिव्हिंग थ्रू ट्रायबल फूड्स, इंडियन गट मायक्रोबायोटा स्टडीज, हा माझ्या प्रेझेंटेशनचा टॉपिक आहे. आणि जे मी बोलणार आहो हे एक रिसर्च पेपर पब्लिश झालेली माहिती 7 वर्षापूर्वी, जेथे आमचं कॉन्ट्रिब्युशन जास्त काही नाही, परंतु त्याच्यामध्ये आपण ट्रायबल फूडमधून विशेष का घेऊ शकतो, ट्रायबलची फिलॉसॉफी विशेष म्हणजे त्यांच्या अन्न खाण्याच्या पदार्थामध्ये, तसेच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटविषयी उद्घाटनाच्या वेळेस चर्चा झालेली होती. त्यामध्ये आपण कोणते अन्न घेतले पाहिजे. एक वेळा आपण जेव्हा CFTRI म्हणतो आणि विशेष म्हणजे लंच ब्रेकच्या वेळेस अन्नाविषयी माहिती होते, ह्याविषयी माझं प्रेझेंटेशन आहे. जस्ट टू स्टार्ट विथ व्हाय इंडियन ट्राईब्स, द ऑथर्स हे आहेत IIST इन्स्टिट्यूट गुवाहाटी आसामवरून, आणि त्यांना जवळपास 30 ट्राईब्सचा अभ्यास केलेला आहे. ते नंतर माहिती सांगतो. इंडियन ट्राईब सिलेक्शन करण्याचं त्यांच्या अभ्यासामध्ये कारण होता, कारण की ते व्हेजिटेरियन डाएट घेतात, त्यांच्या खाण्यामध्ये अँटीबायोटिक्सचा किंवा प्रोसेस फूडचा वापर कमी आहे. बरेचसे त्यांचे जन्म हे नॉर्मल डिलिव्हरीनी झालेले आहेत. औषधाचं प्रमाण कमी आहे, जंक फूड कमी आहे. तर ह्या टॉपिकमध्ये मी आदिवासीविषयी न बोलता आदिवासीच्या पोटामध्ये असलेल्या बॅक्टेरियाविषयी बोलणार आहे. सो दॅट इज वॉट ॲक्च्युली वी कॉल इट द गट मायक्रोबायोटा. हा विषय सर्वसामान्य मागे 15-20 वर्षापासून सुरू झालेला आहे जगात, आणि याच्यामुळे ह्या विषयामध्ये माहिती केल्यामुळे जे काही आपले आधुनिक जगाच्या बिमाऱ्या आहेत, लाईफस्टाईल डिसीजेस आहेत, त्याच्यावरती आपण कशी मात करू शकतो ह्याविषयी मी माहिती देणार आहे. तर हे गट मायक्रोबायोटा किंवा गट मायक्रोबायोम काय आहे? हा आपल्या पोटामध्ये असलेला जवळपास 1.5 ते 2 किलोग्रामचा बॅक्टेरियल लोड आहे. विशेष म्हणजे लहान आणि मोठ्या आतड्यामध्ये असलेला प्रमाण. आणि आपण म्हणतो ऑल डिसीजेस बिगॅन विथ गट. याचा अर्थ असा आहे की तुमचे जर गट हेल्दी असेल तर तुम्ही सुदृढ आहात, हेल्दी आहात, तुमची लॉन्जिटिव्हिटी ऑफ लाईफ जास्त राहील. तुमच्या गटमध्ये जर चांगल्या बॅक्टेरियाचे प्रमाण जर जास्त राहतील, बरेचसे प्रेक्षक फारच स्तब्ध झाले आहेत, मला वाटते त्यांचा हा इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. तर त्या बॅक्टेरियामुळे चांगलं तुमचं राहणीमान राहील, असं एक याची कल्पना आहे. आणि ह्या बॅक्टेरिया काय करतात आपल्या पोटामध्ये, तर त्यांचे वेगवेगळे जे फंक्शन आहेत, अँटीमायक्रोबियल प्रोटेक्शन, जसं आपला अँटीव्हायरल होता, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिझम, द ॲब्झॉर्प्शन, इम्युनिटी सिस्टम. विशेष म्हणजे कोविडच्या वेळेस पण आपण पाहिलं आहे तर कोविड प्रत्येकालाच होत नव्हता. सिम्प्टमॅटिक आणि अनसिम्प्टमॅटिक असे 2 प्रकार होते बऱ्याचशा आपल्या पेशंटमध्ये. आणि असिम्प्टमॅटिक म्हणजे ज्यांच्यावरती सिम्प्टम तयार झालेले नाही, अशा लोकांसाठी तो एक भाग होता. कारण की त्यांची जर रोग प्रतिकार शक्ती जर चांगली असेल, त्यांच्यात जर इम्युनिटी पॉवर जर चांगली असेल, तर तो व्यक्ती कोविडसारख्या बिमारीला म्हणजे ससेप्टेबल होत नव्हता. तशासारखीच याचा लिंक असा आहे की जर तुमचं स्ट्रॉंगर गट मायक्रोबायोटा असेल तर तुम्ही बऱ्याचशा बिमाऱ्याला, इन्फेक्शनला तुम्ही बळी होणार नाही. आपण पाहतो की 2 प्रकारचे इसम किंवा आपले डाईट आहे. एक आहे व्हेजिटेरियन डाईट आणि दुसरा आहे द वेस्टर्न किंवा प्रोसेस फूड. व्हेजिटेरियन डाईटमध्ये आपण पाहतो न्यूट्रिशनल रिच, हाय फायबर किंवा लो फॅट आणि कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स. याच्यामुळे जे आवश्यक घटक आहेत आपल्या शरीरासाठी
जसे शॉर्ट चेन फॅटी ॲसिड्स किंवा गाबार, विटॅमिन्स, पॉलिफिनॉल्स, इंडोल्स अशासारखे पदार्थ पोटामध्ये तयार होत असून ते आपल्या सुदृढ जीवनासाठी आवश्यक आहे. परंतु जेव्हा आपण वेस्टर्न डाएट घेतो, फास्ट फूड घेतो किंवा प्रोसेस फूड घेतो, ज्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट कमी आहेत, फायबर कमी आहे आणि याच्यामुळे ज्या बॅक्टेरियाचा समतोल बिघडतो आपल्या शरीरामध्ये, त्याच्यामुळे बरेचसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आहेत ते जास्त होतात. तर त्याच्यामुळे जेव्हा इन्फ्लेमेशन होतो तर कोणकोणत्या बिमाऱ्या होत्या ते सांगितलं जायचं की जे लाईफस्टाईल डिसीजेस आहेत, कार्डिओव्हास्क्युलर डिसीजेस आहे, हाय ब्लड प्रेशर आहेत, यांचं प्रमाण जास्त होतं. आणि हे का होतं त्याच्यामुळे कारण की जे गट मायक्रोबायोटा किंवा बॅक्टेरिया आपल्या पोटामध्ये आहे त्यांचा समतोल बिघडून अनावश्यक बॅक्टेरियाचा प्रमाण वाढत असतो आणि त्याच्यामुळे ह्या बिमाऱ्या होत असतात. हा एक मी कंपॅरिझन केला आहे ट्रायबल आणि अर्बन पॉप्युलेशनमध्ये कोणत्या बॅक्टेरिया असतात किंवा त्यांचं लाईफस्टाईल काय आहे. तर आपण जेव्हा पाहतो की त्यांच्या जन्माची पद्धत, आपण पाहतो की बरेचसे आपल्या नाही का ग्रामीण भागामध्ये हे नॉर्मल डिलिव्हरीचे केसेस असतात. परंतु जेव्हा आपण पाहतो की शहरामध्ये तिथं सिझारियन ऑपरेशन वगैरे असतात. त्याच्यामुळे काय होतं का जो ॲक्च्युली नॉर्मल मायक्रोफ्लोरा पाहिजे आईमधून येणारा तो त्या मुलामध्ये कमी असते, कुठं सिझारियनमध्ये असते. त्यामध्ये ज्या बॅक्टेरियाचे प्रमाण आहे लाईक बिफिडोबॅक्टेरिया आहेत. बिफिडोबॅक्टेरिया आर द ओनली बॅक्टेरिया प्रेझेंट इन ए लार्ज इंटेस्टाईन आणि ते आईच्या दुधामधूनच मुलाला भेटतात. आणि त्या बॅक्टेरिया माणसाच्या वाढीसाठी किंवा रोगप्रतिकार शक्तीसाठी खूपच महत्त्वाचे असून ते जवळपास जे आपला कोलान आहे किंवा लार्ज इंटेस्टाईन आहे त्याला हेल्दी करण्याचं काम करत असतात. बाकीच्या विशेष दुसऱ्या बॅक्टेरिया आहेत इस्पेशली म्हणजे प्रिव्हेटोला, त्याविषयी मी नंतर बोलणार आहे. आणि जेव्हा आपण म्हणजे खाद्यपदार्थ पाहतो तर फास्ट फूड आहे, प्रोसेस फूड आहे, वेस्टर्न फॅट ऑइल्स आहे, रिफाईंड ऑइल आहे, त्याच्यामुळे जे आवश्यक बॅक्टेरिया आहेत माणसाच्या शरीराची जोपासना करणारे त्या बॅक्टेरियाचं प्रमाण कमी राहते जेव्हा आपण आधुनिक जगाचा किंवा जे मॉडर्न लाईफस्टाईलचा विचार करतो. त्याच्यामुळे जस्ट टू सी व्हॉट आर द ॲक्च्युअली लाईफस्टाईल डिसीजेस. आणि हे गट मायक्रोबायोटा जेव्हा इम्बॅलन्स होतो, ज्याला आम्ही गट डिसबॉयसिस म्हणतो, जवळपास 30 ते 40 वर्षापर्यंत प्रत्येकच माणूस गट बायोटाच्या माध्यमातून हेल्दीच असते. 5 किंवा 10 वर्ष ते इकडे तिकडे फरक होऊ शकते, नॉर्मल डिलिव्हरीचा असो किंवा सिझारियनचा असो. परंतु जे सिझारियन बेबी वगैरे असतात त्यांना इस्पेशली जे अलर्जी असते, त्याच्यानंतर आपले ऑटिझमसारख्या बिमारी आहेत ह्या जास्त असतात. तर ह्या जवळपास ज ओबेसिटीपासून आहेत, IBD वगैरे आहेत किंवा आर्थरोस्क्लेरोसिस आहेत, हे इन्फेक्शन वगैरे हे जास्त असते जेव्हा गट मायक्रोबायोटा हा डिसबायोटिक असतो किंवा जे सिझारियन असतो किंवा जे लोक वेस्टर्न डाईट अडॉप्ट करतात त्यांच्यासाठी. माझ्या ह्या प्रेझेंटेशनचा हा मुख्य भाग आहे. ही स्टडी जेव्हा सांगितलं की मी दिहांगिया आणि डॉक्टर महारजीबीर खान फ्रॉम आसाम त्यांनी हे स्टडी केलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी हे जवळपास 30 ट्राईबचा गट मायक्रोबायोटा द फिकल सॅम्पल घेऊन स्टडी केलेला आहे. आमचे गोंड जातीचा पण त्याच्यात समावेश केलेला होता आणि ते त्यांनी आमच्या जवळच्याच गडचिरोली जिल्ह्याचं नाही परंतु त्यांनी आपल्या तेलंगणामधून सॅम्पल घेतलेले आहेत. आणि यांना पाहिलेलं आहे यांच्या स्टडीमध्ये मुख्य 3 ऑब्झर्वेशन पाहिले आहेत की जे गट बॅक्टेरियल प्रोफाईल आहे हे मॉडर्न लाईफस्टाईलमुळे बदलत असून इन्फ्लेमेटरी डिसीजेसकडे जास्त जात असतो. जिओग्राफी आणि डाईट हा एक त्या बॅक्टेरियावरती जास्त त्याचा फरक असून प्रिव्हेटोला नावाची बॅक्टेरिया याचं प्रमाण जे आदिवासी लोक आहेत, ट्रायबल कम्युनिटी आहेत त्यांच्या पोटामध्ये जास्त असतो. म्हणजे प्रिव्हेटोला बॅक्टेरिया तुमच्या पोटात जर असेल तर तुम्ही सुदृढ राहाल. तुमची आहार पद्धती हे व्हेजिटेरियन डाईट आहे, ट्यूबर्स आहेत, मिलेट्स आहेत. त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की बाकीचे जे मंगोलियन पॉप्युलेशन आहे त्याचा हा मिळता जुळता आहे. त्याच्यामध्ये दुसऱ्या बॅक्टेरियाचं त्यांना माहिती दिली जशी फेकल बॅक्टेरियम आहे, क्लोस्ट्रिडियम आहे, रोमिनिकोकस. याचा अर्थ असा की ह्या बॅक्टेरिया जर असल्या तर तुम्ही सुदृढ राहू शकता. आणि यानुसारच फिकल मायक्रोबायोटा ट्रान्सप्लांटेशन हे आता सध्या सुरू आहे. कशासाठी? फॉर IBD अँड IBS डिसीजेस.
त्याच्यानंतर त्यांनी कम्पेअर केला द वर्ल्ड पॉप्युलेशनसाठी आणि त्यांनी सांगितलं की प्रिव्हेटोला बॅक्टेरिया ही एक महत्त्वाची आहे आपल्या सुदृढ जीवनासाठी. तीच माहिती आहे याच्यावरती. हे त्याचं कन्क्लुजन टाकीतलं आहे की द प्रिव्हेटोला बॅक्टेरिया किती महत्त्वाची आहे आणि काय आहे. आणि त्यांनी कम्पेअर केलं की मंगोलियन ट्राईब किंवा द ट्राईब फ्रॉम द युरोप आणि अमेरिका ऑल्सो. आणि त्यानं पाहिलं की प्रिव्हेटोला ही बॅक्टेरिया खूपच महत्त्वाची असून जे व्हेजिटेरियन डाईट घेतात त्यांच्यासाठी हे त्यांच्या पोटामध्ये हे जास्त प्रमाण असते त्याचं. म्हणून इन जनरल द गट मायक्रोबियल डायव्हर्सिटी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या खंडामध्ये कशी आहे त्याच्यामध्ये हा एक त्यांनी मॅप बनवलेला आहे. आणि याच्यामध्ये हेच दिसत आहे का प्रिव्हेटोला बॅक्टेरिया जे व्हेजिटेरियन लोक आहेत त्याचे प्रमाण जास्त आहे. आपण जेव्हा इंडियन ट्राईब आणि इंडो कॅनेडियन ट्राईबकडे पाहतो आणि जे मायग्रेशन आपण पाहतो त्याच्यामध्ये पण आपल्याला हाच फरक दिसून येतो की जेव्हा आपण प्रोसेस फूड घेतो, आपण जेव्हा म्हणजे वेस्टर्न लाईफस्टाईल पाहतो, त्या सॅनिटेशन जास्त पाहतो, त्याच्यामुळे ज्या महत्त्वाच्या बॅक्टेरिया आहेत पोटामध्ये त्यांचं प्रमाण कमी आहे. मागच्या उद्घाटनापासूनच आपण सर्वजण पाहतो तर द लाईफस्टाईल ऑफ द ट्रायबल पीपल आणि हे बरेचशा माहिती त्यांना सर्वांनाच माहीत आहेत. बाकीचे पण स्पीकर याच्यावरती बोललेले आहेत. हेच जे खाद्यपदार्थ आहेत आपल्याला ॲक्च्युली वेगवेगळ्या अन्नाज पदार्थाची डायव्हर्सिटी आवश्यक आहे जे डिफिकल्ट टू डायजेस्ट त्याच्यामुळे तुम्हाला म्हणजे हाय फायबर रिच मिनरल रिच हे अन्नपदार्थ भेटू शकतात. तशासारखीच हे बाकीचे जंगली पदार्थ आहेत ज्याच्यामध्ये पण वाईल्ड एडिबल फ्रूट्स वगैरे आहेत त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला न्यूट्रिएंट रिच वगैरे किंवा ज्या बॅक्टेरियाला ग्रो करण्यासाठी आवश्यक पदार्थ आहेत त्याच्यामध्ये मिळू शकतात. तर टू कन्क्लूड मला म्हणायचं हेच आहे की फूड डायव्हर्सिटी हे आवश्यक आहे कारण की त्याच्यामुळेच तुम्हाला मायक्रोबियल डायव्हर्सिटी इन द गट होईल आणि ती मायक्रोबियल डायव्हर्सिटी चांगल्या बॅक्टेरियाची पाहिजे हा असा याचा एक कन्क्लुजन आहे. जेव्हा त्यांनी बऱ्याचशा गट मायक्रोबायोटावरती स्टडीज केला आणि त्यांना पाहिलं की हे सरप्रायझिंग गट मायक्रोबायोटा फ्रॉम African hunter-gatherers, they have actually a better gut microbiota than any other person in the world. So that is what actually they wanted to conclude. Just I will tell what I am actually doing is, I am trying to fill, just in 2 minutes I will finish, or maybe in 1 minute. Chairman sir is asking me to actually conclude fast. Actually what I am doing from last at least 15 or 20 years in CFT, I am trying to actually identify the such useful bacteria from the different food products from the human health and from the different fermented food and develop some product and incorporate them in our regular diet. त्याच्यामुळे काय होईल त्यांचं जे आवश्यक बॅक्टेरियाचं प्रपोर्शन आहे हे वाढेल. त्याच्यामध्ये आम्ही पहिली बॅक्टेरिया आयडेंटिफाय केली आहे बिफिडोबॅक्टेरिया आणि मी सांगितलं आहे की बिफिडोबॅक्टेरिया फक्त आईच्या दुधामधूनच भेटतात. त्याच्यानंतर बिफिडोबॅक्टेरियाचा सप्लाय आपल्याला नाहीच आहे. तुम्हाला जर बिफिडोबॅक्टेरिया पाहिजे असेल तर तुम्हाला मलाच विचारावं लागेल कदाचित. ह्या बॅक्टेरिया जितक्या जास्त राहतील तेवढे तुम्ही सुदृढ आहात, तुमची इम्युन सिस्टम स्ट्रॉंगर आहे, तुमची डायजेशन चांगलं आहे, तुमचे बाउल मुव्हमेंट चांगली आहे. तर ही आहे ती आपले बिफिडोबॅक्टेरिया. त्याच्यानंतर दुसऱ्या 2 बॅक्टेरिया आहेत. हे काही लॅक्टोबॅसिलस जे स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये काम करतात आणि हे आहे बॅसिलस, ठीक आहे, जे म्हणजे महत्त्वाची आहे ते स्मॉल इंटेस्टाईन द इम्युन मॅच्युरेशन, द डायजेशन ऑफ फूड आणि ॲब्झॉर्प्शन ऑफ फूड. नेक्स्ट स्लाइड विल बी आय थिंक व्हेरी युजफुल for most of the Marathi audience to see. Actually, one of the lecture I gave, webinar actually was organized in Shillong, and we wanted to tell की fermented food मध्ये पण बऱ्याचशा महत्त्वाच्या बॅक्टेरिया असतात. त्याचं जर आपण सेवन केलं तर त्याच्यामुळे पण तुम्ही म्हणजे गट मायक्रोबायोटा रिस्टोअर करू शकता. आपण नेहमीच दही किंवा दुधाचे पदार्थ घेतो, फर्मेंटेड प्रोडक्ट घेतो, लोणचं वगैरे घेतो, हे एक फार महत्त्वाचे प्रोडक्ट आहेत आणि ते पण तुम्हाला गट मायक्रोबायोटा स्टॅबिलाईज करण्यासाठी, नॉर्मलायझेशन करण्यासाठी, रिस्टोअर करण्यासाठी काम करतात. एवढं बोलून मी कन्क्लूड करत आहे ह्या टॉपिकविषयी. जे बरेचसे कोणी असतील ज्यांना म्हणजे मायक्रोबायोलॉजीमध्ये किंवा बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये CSIR मध्ये जर PhD करायची असेल ते संपर्क करू शकतात. हा एक खूप महत्त्वाचा विषय आहे. ऑर्गनायझेशनने ट्रायबल सायन्स काँग्रेस हा एक सेशन इथं ऑर्गनाईज करून मला एक संधी दिली. मला आशा आहे की हा विषय पण समोर जाऊन याला महत्त्व येईल कारण की बरेचसे जे लाईफस्टाईल आहे ट्रायबल
पॉप्युलेशनची ही महत्त्वाची आहे असं माझं पण मत आहे. मी एवढे बोलून मी माझे प्रेझेंटेशन बंद करतो. वन्स अगेन थँक्स फॉर द ऑर्गनायझर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. It was very, very important. May I now request Professor Gitanjali Das, ma'am, Vice Chancellor of Berhampur University, Banja Bihar, Berhampur. Ma'am will be speaking on tribal women and sustainable development in Odisha. Esteemed Chairman, fellow panelists on the dais, dignitaries and participants, delegates of the dais sitting in front of me of Indian Science Congress, media persons, students and friends, ladies and gentlemen. I feel very privileged to be here, to be a part of this Indian Science Congress, especially on a session like this, which is introduced, which is for the first time, that is women and women empowerment and sustainable development, and particularly tribal women. And it is also a coincidence that the first citizen of India is a tribal woman from Odisha, to the state which I represent. And I also represent a university which I am leading as the Vice Chancellor, which has 188 colleges in 7 districts, 6 of which are tribal districts. Raigada, Malkangiri, Nabarangpur, Kandhamar, Gajapati and Ganjam. All these districts, excepting Ganjam, are all tribal dominated. More than 60% of population in these districts are tribals. So, and I was posted in a university before my retirement, before coming to this university as the Vice Chancellor. I was posted in Fakir Mohon University. Again, that was in a part of Nilagiri, which was under the Schedule 5 subdivisions of Indian Constitution. So, in a way, I am quite connected to this, to the problems and to this area of study, but I am a political scientist. So I'm maybe an odd man out in this crowd. Anyway, so thank you. I really, I feel very privileged. I thank the organizers of RTML University to have invited me and to just share some of my stray thoughts and feelings with all of you. So the Indian Constitution defines the indigenous people as tribes with having primitive traits, distinctive culture, shyness with public at large, geographical isolation, social and economic backwardness before notifying them as scheduled tribe. So this was the first. These are the features. Mostly they have a social and cultural identity distinct from the mainstream society. What we call Hindu, we call them Hindu. They are not at all Hindu. They are tribes and indigenous people. We are a derivation. Someone was telling in the morning. We have been derived from them. They are not. They are most primitive. There are 75 primitive, particularly vulnerable tribal groups in India, and Odisha has 13 PVTGs within 62 different tribal communities living in Odisha. Odisha has a very special significance while we talk of tribes and tribal culture and tribal sustainability and women empowerment, especially because tribal women have a very typical lifestyle in Odisha. Out of the 30 districts in Odisha, Raigada, Nabarangpur, Koraput, Malkangiri, Kandhamar, Gajapati, Mayurbhanj, Sundargarh, Keonjhar has more than 50% of tribal population. And in other districts in Odisha, the female population is lesser than in the tribal districts. Tribal districts, men-women ratio is quite good. Names of PVTGs in southern Odisha: Dongoria, Juang, Kharia, Kuttiakandha, Lamji Saura, Mankadia, Saura, and they constitute around 80,000, almost 81,000
of the population out of 95 lakhs ST population, constituting 22.85%. In Odisha, it is almost 23% of the population they belong to scheduled tribes. So Odisha has among the three largest population after MP and Madhya Pradesh and Maharashtra. Tribal engagement of Odisha can be classified into 6 types: hunting, collecting and gathering types, cattle herding types, simple artisan type, hill and shifting cultivation type, settled agriculture type, and industrial urban worker type. And men have very peculiar situation in some of the districts to which I have been. I have been to Keonjhar on I was working on a major project in Keonjhar. Most of the men are migrated because of mining. Aggressive mining has taken place in Keonjhar. Men migrate from agriculture to industry, urban-based projects, mining in search of work. Acute poverty is there in almost all these areas, and they migrate. So what happens to women? Women, mostly they do not migrate. They are just left behind. They are left behind groups. They manage agriculture, they manage cattle, they are primary caregivers of the family. All elderly people are there at their care, and without any formal education. So this is very peculiar in Odisha. When we talk of empowerment, I have a very particular definition of empowerment, like bottom-up process of transforming gender power relation through individual or group developing awareness of subordination and building their capacity to challenge it. So unless and until we change the power relationship in the society, which is mostly patriarchal, even though there are tribes, there is patriarchy. We always think that only in upper middle class patriarchy is there, and lower middle class and like tribals, patriarchy is not there. It is a myth. Tribals are again, they are double, they are subjected to double jeopardy, that is patriarchy also. Poverty is acute among them, and patriarchy is also there. 44% of the total area was declared as Schedule 5 area of the state. The southern part of the state, to which I represent, it constitutes 10 districts mainly concentrated by the tribal population known as the Schedule 5 area. Odisha has 61,204 square kilometers of forest area, which is almost 39%, but previously it was 52%. So the green coverage has been lost due to aggressive modernization, industrialization and globalization, we can say. So even the policy of adoption of neo-colonial economic policies of the government also, it has made the tribals a very vulnerable community. Very vulnerable community. Please give me 10 minutes. Huh? So the theoretical framework, we can say there is an eco-feminist approach. Women are closer to nature because of their position as mothers and homemakers. The organic relationship between women and nature projects women as both the primary victim of environmental degradation and the most appropriate participants in environmental conservation. They conserve the forest. They conserve the forest the most because they own the forest. They feel the ownership of the forest, and so this is an approach which has been developed by Vandana Shiva. Vandana Shiva has made it very popular, and she was a physicist. And another thing is the indigenous knowledge of local forest products and knowledge of forest management. That also is a part of tribal culture, and especially women. They know the local resources, which are a strength for the local governance and management over the forest. The tribal women own forest as they spend most of their time collecting fuel, fodder, food and other non-timber forest products for their own domestic consumption as well as livelihood.
Their current approach to forest management includes protecting the forest from external affairs, extinguishing forest fire, involvement in regeneration and conservation activities for the forest, leading to sustainable forest management in Odisha. So this is a very, very important point while we talk of sustainability. Holistic sustainable tribal development in Odisha is a transdisciplinary approach to understand the socio-ecological system and intervene to enhance the competency of the community and build the social, natural and financial capital to pursue the livelihood, food security and well-being, which leads to improved human development. Such intervention requires in 3 areas. All the 3 areas are interdependent. One is education in the form of building competency. The second is skill development for adoption of appropriate technology. And the third is organic farming for mitigation and malnutrition, which collectively form the parameters of human development. And we are talking of sustainable development plans, and all the goal 5 talks of gender equality, and all the sustainable development goals, they are quite closer to women empowerment. Organic farming and climate resilient livelihood on the agroforest mosaic landscape demonstrate possible pathways to overcome some of the challenges to build the competency through the community resource person. We have developed a program called community resource person, so they will guard the forest, because there is a lot of huge deforestation in Odisha nowadays. So this has to be protected, and their teaching and training of tribal youths and especially women, keeping in mind the responsibility of Forest Rights Act. Forest Rights Act also has a special linkage in Odisha. It has a special importance in Odisha because my research, whatever little research I have done on tribal women, it shows that Forest Rights Act has been very much, it has been distributed, the patta or the record of rights has been distributed among tribals in Odisha in a very successful manner. But the whole problem lies with us that we give emphasis on individual rights, not community ownership. Unless and until we give the community ownership to tribals as per the Forest Rights Act, the forest will not be protected. So that's a very, very important point. I will end with 2 case studies. I have many things to share, but due to shortage of time, so I will give you 2 examples, 2 case studies. One is given by Chetana. Chetana is a Austria-based, it's a company, it has taken out some study on women empowerment and sustainability in some of the southwestern districts of Orissa. They claim that it shows that although organic farming, it has been done on organic farming. So they have shown that although organic farming has positive impact on women, such as improvements in health and food security, there are significant drawbacks due to the factors such as additional workload. Women are doubly burdened, they are burdened, multiple burden. Women are debarred from decision-making process. They are not there in the decision-making bodies. And another is Jaipur. It has been taken up, this research has been taken up, Swaminathan Research Foundation. 32 varieties of rice have been cultivated in Koraput, and all are done by women. All are done by women, but it has 4 purposes: conservation, cultivation, consumption, and commercialization. Women have a very important role to play in all these aspects. But again, villages have seed banks for organic farming. They were created. SHGs have been there for distributing vermicomposting units. It has improved livelihood, but it added to the food security also. Biodiversity also, along with sustainability, has been maintained. But in both the studies, it has been shown that women are again victims of patriarchy. So whenever the question of training comes, whenever the question of decision making comes, whenever there is the question of power comes, it is always taken by men. So women are, though equal, though they are nearer to this, their
definitely they are moving ahead in terms of equality and in terms of power relationship, but still we have to fight patriarchy. Thank you all. Thank you once again. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now, may I invite chairperson of today's first technical session, Professor Pardeshi Lal sir, for chairperson's remark as well as his talk on the topic Science and Technology for Sustainable Development with Women Empowerment in Nagaland State. Sir, it's over to you. तो खाली रेगुलेट करने के लिए बताओ। है ना, मंच पर विराजमान आदरणीय, मेरे सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए आदरणीय देवियों और सज्जनों, साइंस कांग्रेस के संदर्भ में अगर बात की जाए तो उसका एक उद्देश्य है नारी को और न्याय की शक्ति प्रदान करना। और मैं शुरू करना चाहूँगा, अगले 10 मिनट में कोशिश करूँगा कि आपके साथ कुछ बात कर सकूँ जो कि सारगर्भित हो। मैं शुरू करना चाहूँगा सत्र को अपने यत्र नार्येत पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रई तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्रा फला क्रिया। देवियों और सज्जनों, इसका सार है जहां नारी की अवहेलना होती वहां आप कुछ भी कर ले, विकास संभव नहीं है। और जहां नारी की पूजा होती है या नारी का सम्मान होता है वहां देव भी बसते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब कभी नागालैंड प्रदेश की बात आती है और कभी नारी सम्मान की बात अगर की जाए तो मेरे संज्ञान में पूरे भारतवर्ष में यह एक ऐसा राज्य है जहां नारी रक्षा समाज में सर्वोपरि है। मेरे संज्ञान में कोई दूसरा प्रदेश भारतवर्ष में नहीं है जहां नारी का इतना आदर होता हो। दूसरी चीज, एक वीरों का प्रदेश है नागालैंड और उसकी जो मुखिया, पूरे इतिहास को अगर देखें तो रानी गैडिनलुई, उनसे बड़ा कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहा नागालैंड से। अगर हम आज विज्ञान और तकनीकी की बात करें विकास के परिप्रेक्ष्य में, तो बड़ी सहज सी बात है। बिना विज्ञान तकनीकी के विकास की सोचना भी मेरे ख्याल से ये सार्थक नहीं होगा। तो समय को बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए देवियों और सज्जनों, मैं आपको उस प्रदेश के लोगों से रूबरू कराना चाहूँगा जिसकी एरिया, पूरा टोटल भौगोलिक जो एरिया है उसका 16,579 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन ईश्वर ने इस छोटे से प्रदेश को हर तरह के वातावरण से नवाजा है। गर्मी भी बेतहा पड़ने वाले क्षेत्र हैं और टेम्परेट क्लाइमेट जहां हमेशा सर्दी हो ऐसे भी क्षेत्र हैं। कल कारखाने हैं नहीं प्रदेश में, तो विकास की सुई दो माध्यमों पर प्रगति की ओर चल रही है। एक तो है कृषि, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है,
और दूसरा अपार प्राकृतिक संपदा। समय चूंकि कम है, आइए आप लोगों को नागालैंड के लोगों से रूबरू कराता हूं। छोटा सा प्रदेश, 17 जनजातियां, कोई किसी की भाषा नहीं जानता। एक आम भाषा है जिसको नागामीज का रूप दिया गया, और यह भाषा हिंदी बंगाली की खिचड़ी भाषा है। तो अब आप लोगों को नागालैंड के से रूबरू कराना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। ये तो बिल्कुल विकास की सीढ़ी को आगे आगे लेने के लिए ये 3 जो स्तंभ हैं, मूल स्तंभ, कहीं भी पैसा चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। दूसरा, सामाजिक न्याय या समाज में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। तीसरा, प्राकृतिक संरक्षण और प्रकृति का संरक्षण। यह 3 मुख्य बिंदु ऐसे हैं जिनको तीनों आपको, ये तीनों के तीनों स्तंभ आपको नागालैंड में भरपूर मिलेंगे। अगर आगे बढ़ें तो हो क्या रहा है नागालैंड में, जैसे देखें, चूंकि मैंने कहा ये कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ कृषि, और वैसे भी जिसको कहते हैं ना कि नागालैंड इज ऑर्गेनिक बाय डिफॉल्ट, ये प्राकृतिक तौर पर यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। लेडीज ग्रुप जिनको हम मैकीज बोलते हैं, ये हर जगह इन्वॉल्व हैं, या एक कहिए नटशेल में इसको एक बिल्कुल इनकी ये लेबर फोर्स में 44.7% भागीदारी है, 44.7% अगेंस्ट 53.4% मेल। ये इनका मुख्य उद्यम क्या है? चूँकि सब ऑर्गेनिक है, उसके पैकेजिंग करना, कैन फूल वेजिटेबल्स, प्रोसेस स्पाइसेज। चूँकि स्पाइस, ऐसे मैंने कहा हर तरह का क्लाइमेट वातावरण है नागालैंड में, तो यहाँ 3 चीज़ें, सिनामोन जिसको हम कहते हैं दालचीनी, कार्डमम इलायची, और ब्लैक पेपर या गोल मिर्च, ये तीनों की खेती होती है और तीनों की पैदावार अच्छी है। लेकिन सड़कें न होने के कारण, मतलब उचित तौर पर सड़कें नहीं होने के कारण, उनका एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये जो है कि ठीक समय पर संभव नहीं हो पाता है। तो अभी थोड़ी मार्केटिंग की व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है। देखा मैंने स्टेट गवर्नमेंट ने 2030 के लक्ष्य में रखा कि सारे जहाँ गाँव का समूह है उसके मुख्य जगह पर मैकी बाजार, लेडीज का जो बाजार जो कि होगा, सारा सामान वहीं बेचेंगी और उनको ई मार्केटिंग सुविधा से नवाजा जाएगा। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं उस शुभ घड़ी का, जबकि लेडीज जो है कि दे विल बी सेल्फ एम्पावर्ड। और यहाँ पर मैं आप लोगों का, चूंकि नागालैंड प्रदेश जनजातियों का प्रदेश है, यहाँ हर घर में पिगरी, पाउल्ट्री अमूमन हर घर में मिल जाएगा। और एक अच्छी व्यवस्था ये है, व्यवसाय की दृष्टि से, खुद खाने की दृष्टि से, यहाँ वीमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी 600 औरतों का एक समूह है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत में शाल से लेकर के जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, सबकी लेन देन व्यापारिक तौर पे बरकरार रखे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक संपदा अपार है, तेल, कोयला, यहाँ तक कि कुछ जो कि पहाड़ियों में प्लेटिनम का जो है उसकी भी उपस्थिति मिली है। अब सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि ये कोयला, तेल और से बाकी जितने भी ये लाइमस्टोन वगैरह, उनका जो कि दोहन किया जाए समाज और विकास के हित में। अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज में बात की जाए तो लेडीज का रिप्रेजेंटेशन
35% है और उसमें 29% तो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं। जाहिर है उस प्रदेश में जहां पर 29% क्लास 1 ऑफिसर हों गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उस प्रदेश में नारी की मर्यादा का संरक्षण यह एक आम बात है। देवियों और सज्जनों, सवाल आती है कि कैसे इसको बरकरार रखा जाए, जो विकास की सीढ़ी को बरकरार रखा जाए। तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी साइंस कॉलेजेज हैं जहां यूजी पीजी चलते हैं, और वैसे 69 कॉलेजों में 9 में साइंस की शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर भी औरतों की भागीदारी टोटल, द ब्लू जो है ये टोटल है, और उसमें आप देखेंगे बीच में ये नारियों की भागीदारी है, फीमेल्स की भागीदारी है, और रेड जो है वो ये जो है कि ये मेल की या पुरुष की भागीदारी है। ऐसे ही ये 5 एकेडमिक ईयर को टारगेट किया, 18, 19, 20, 21, 22। कुछ ग्रेजुएशन साइंस में भी सिनारियो वही है, वही परिदृश्य है। फीमेल स्कॉलर्स दे आर मोर देन द मेल्स। यहां तक कि शोध पीएचडी लेवल पर भी 5 सालों का डेटा जब लिया गया तो इसमें भी परिदृश्य वही है जो बीएससी एमएससी उसके आधार पर। जाहिर है कि कल की पीढ़ी जब विकास और इसके संरक्षण की बात करेगी तो इसमें औरतों की भागीदारी पुरुषों से कम नहीं होगी। जैसा मैंने कहा कि वीविंग जो है, ये ड्रेस बनाना, यहाँ पर 17 ट्राइब्स हैं। जस्ट आपका परिचय कराने के लिए, ये एक अंगामी ट्राइब है। सबकी वेशभूषा, सबके जो ट्रेडिशनल अटायर्स हैं, सबके जो कि अलग अलग हैं। आप इससे, ये आओ ट्राइब है, इनकी मुद्रा से ही ये इंगित होता है कि ये किस तरह के जो कि वीर पुरुष या वीर समाज रहा है। ये चकेशांग ट्राइब है, ये चैंग है। ध्यान देने की बात यह है कि सबके अपने अपने जो ड्रेस हैं अलग है, और इस ड्रेस की संरचना में, इसको तैयार करने में औरतों की मुख्य भूमिका है, जो इसमें लॉयन लूम टेक्नोलॉजी के आधार पर ये सब बनाती हैं। कचारी ट्राइब या मुंगन ट्राइब, कोन्यक ट्राइब, कुकी ट्राइब, लोथा ट्राइब, होम ट्राइब, पोचुरी ट्राइब, रेंगवा ट्राइब, संगटम, शुमी, टिखिर, इमचुंगर, जेलियांग, ये 17 ट्राइब हैं जिनकी वेशभूषा अलग है। और इसकी पृष्ठभूमि में जितना भी इनकी वेशभूषा तैयार करने का ये काम है ये नारी समूह का। इसमें जैसा मैंने कहा कि इनका एक अपना संगठन है करीब 600 लोगों का। और अगर बात करें तो इसको जो कहते हैं ना कि कल्चर के जो कैरियर हैं, ये दरअसल में इस प्रदेश में इनकी नारियों की मुख्य भूमिका है। इसमें देखा जा सकता है लॉयम लून एक करघा पर जिसमें शॉल बुनती हुई, और दूसरा जो है प्रकृति से जिसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, जो पता नहीं है, सिल्क के रिसोर्सेज से ये जो सिल्क का उत्पादन ये प्रदेश में अभी एक काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रहा है। ये है चूँकि सब कुछ ऑर्गेनिक है, सड़कें उतनी है नहीं कि चीज़ों को बाहर भेजा जा सके, तो ये स्थानीय बाजार हैं जहाँ पर ये समय के हिसाब से जो कुछ भी एग्रीकल्चर में पैदा होता है, ये मोस्टली ज़्यादातर औरतें ही ये बाजार लगाती हैं। आप देख सकते हैं ये मिर्चा, इसको नागा मिर्च बोलते हैं। आज तक मेरे संज्ञान में दूसरी कोई मिर्च इतनी तीखी नहीं हुई जितनी कि ये नागा, एक भुज जलोकिया की एक प्रजाति है
जो इसको किंग चिली भी कहते हैं ये, लेकिन एक गजब की जो कि तीखापन इसमें है, और इसका मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस तो कहने की बात नहीं है। बड़े बड़े जो रोगियों को, खास करके जो एसिडिटी से जूझ रहे थे, उनको वहाँ के लोकल जो कविराज ने इसके माध्यम से ठीक किया। आप देख सकते हैं ये जितने भी ये प्रोड्यूस हैं, पाइनएप्पल जितना भी, सब ऑर्गेनिक है, सब स्थानीय है। प्रदेश में अपना उनका एक जो है कि जिसको कहते हैं कि दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर कि ये बाहर से कोई इस तरह की चीज़ जो खेती में पैदा होती बाहर से नहीं, बनाना, केले बाहर से नहीं आएंगे, पाइनएप्पल बाहर से नहीं आएंगे, वहाँ का जो पैदाइश है वो बाहर जाएगी। ये इनकी इकोनॉमी का जो मेन बेस है, जिसके बेस में या जिसके आधार में मुख्यतः लेडीज है। ये मार्केट है जहाँ देख सकते हैं सुपारी से लेकर के ये सारे तरह के फल, यहाँ तक कि मीट, ड्राई फिश, ये सारी चीज़ें एक जगह आपको मुहैया हो जाएंगी। और ये ज़्यादातर ये सारे मार्केट ये लेडीज जो है कि वो संभालती है। थोड़ा क्विकली मैं पास ऑन करूँगा। ये नई जनरेशन को आगे के लिए, ताकि विकास की सीढ़ी को, परंपरा को बनाए रखें और उससे जो है कि उसको बरकरार रखें, इसके लिए जितने शिक्षण माध्यम जैसे KVK कृषि विज्ञान केंद्र, उसके माध्यम से इनको पोस्ट हार्वेस्टिंग, वैल्यू एडिशन से टेक्नोलॉजी, सोप मार्केटिंग, एनिमल सेक्टर विकास, जैसा मैंने कहा कि हर घर में पाउल्ट्री एंड पिगरी आमतौर पर मिल जाएगी, और वो अच्छा बिजनेस का साधन भी है। बैकयार्ड में वो उगाएंगे और एक एक जो है कि पिग से करीब 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ का उनका इनकम है। सब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं और सबकी पोस्ट हार्वेस्टिंग, वैल्यू एडिशन, वर्मी पोस्ट, यानी एक कृषि उत्पाद को उसको और जो है बढ़ावा देने के लिए ये जो है खास करके फीमेल या नारी समूह वो तत्पर है। यह स्लाइड, इस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये नारियों का समूह है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहते हैं, ये नारियों का समूह है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। ये एलोवेरा से साबुन बना रही हैं, और एलोवेरा से हम सभी परिचित हैं, इसका मेडिकल सिग्निफिकेंस हम सभी जानते हैं। यह अभी एक नई जो है कि पद्धति शुरू हुई है, जो अभी तो एक गांव में हो रहा है, और जो आम प्रक्रिया में सारे गांवों में ये प्रचलित होगी, और धीरे धीरे से प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2030 तक इसको आम मार्केट में उतारा जाए। ये सेल्फ पिगरीज, जैसा मैंने कहा कि हर घर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा पिग का जो बेस्ट जो है, ये प्रजाति है, वो सप्लाई होती है। ये प्रकृति से, जंगल से खाना मिल जाता है आराम से। ये बायोमास ड्रायर जो है, ये बायोमास फायर जो ड्रायर है, इसके माध्यम से चारा इकट्ठा कर लेते हैं, और हर महीने 5 से 6 हज़ार रुपये ऑन द एवरेज एक पिग से इनकी कमाई होती है। आखिर में मैं यही कहूँगा, नागालैंड में एक अछूता पार्ट रह गया, जिस पर कि एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि द होल इनफैक्ट इंटेलिजेंसिया is working on war footing, and that is it's a vast repertoire of these medicinal plants. Hectic efforts are going on to isolate the active ingredients so that this can be translated into reality at the level of industry. With that, thank you very much indeed. Thank you, sir. Thank you so much.
Ji, and thank you for adhering to the time. Now may I request on the dais Professor Shyam Koreti, the convener of Tribal Science Congress, for presenting a small token of love from our side. Sir, may I request, to the chairperson of today's session, Professor Koreti sir, please present the memento to Professor Pradeshi Lal sir, ex-Vice Chancellor of Nagaland University. Professor Koriti sir will now present memento to Professor Geetanjali Dash madam, Vice Chancellor of Berhampur University. Ma'am is here. Yeah. Thank you, sir. Professor Koriti, now please present the small token of love to Professor Vinod Bala ma'am. Ma'am is Emeritus Scientist, Chemistry Department, Marshida and the University Rohtak. Now Professor Wankhede ma'am. Ma'am is Principal of Government Science College at Gadchiroli. Sir, now to Professor Prakash Halami sir. He is Chief Scientist at Central Food Technology and Research Institute, Mysore. Thank you, sir. Thank you so much. My apologies that I have to stop to all the scholars and such a experienced senior people in between because of the shortage of time. Just 1 minute, ma'am. And we will have a very quick vote of thanks. I request my colleague, Professor Barmod sir, to kindly finish it quickly within a minute. नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर एवं मेरे सामने उपस्थित सभी अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। इस मनोहर जनजाति विज्ञान कांग्रेस के तकनीकी सत्र भाग 1 समापन की ओर बढ़ते हुए मैं डॉक्टर रमेश बिरमोड आप सभी का धन्यवाद देता हूं। मुझे गर्व है कि गर्व की अनुभूति है कि मैं इस सम्मेलन का हिस्सा बन चुका हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कुलपति प्रोफेसर परदेशी लाल, नागालैंड विश्वविद्यालय, जिन्होंने नागालैंड में महिला सशक्तिकरण के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास पर अपने विचार रखे। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्राध्यापक विनोद बाला तक्षक जी का, जो एमरिटस वैज्ञानिक है एमडी विश्वविद्यालय रोहतक से, जिन्होंने भारत में जनजातीय विकास की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर हेमलता जी वानखेड़े जी, सरकारी विज्ञान विद्यालय गढ़चिरौली, महिलाओं के संदर्भ में जनजातीय आबादी का उत्थान पर चर्चा की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्राध्यापक प्रकाश हलामी सर जी का, जो मुख्य वैज्ञानिक और प्राध्यापक हैं CSIR से। उन्होंने आदिवासी भोजन के साथ स्वस्थ जीवन, इंडियन गट माइक्रोबायोटा स्टडीज़ पर अपना विचार रखे। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं प्राध्यापक गीतांजलि दास जी, माननीय कुलपति ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय ब्रह्मपुर, जिन्होंने आदिवासी महिलाओं पर ओडिशा में सतत विकास पर अपने अमूल्य विचार रखे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सत्र के सचिव डॉक्टर श्याम कोरेटी जी, और जिनके अथक परिश्रम से यह सत्र सफल हुआ, ऐसे मेरे सारे साथीगण का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much. We will break for quick lunch and we will meet again at 2:30 sharp. Thank you so much.
पहले सर्टिफिकेट के लिए बहुत क्रेज रहता था, अब बुढ़ापे में कोई जरूरत नहीं। थैंक यू मैम।